Good morning, dear student. Today I am going to teach you poem number third. Two poems are already done, and the poem name is The Voice of the Rain, composed by the great poet Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet, and most of the poems are written. The topics are based on the nature. Here he explained about the rain. So when he appealed, when he asked, when he talked rain, it means he had personified the rain. In figure of speech personification, inanimate object and abstract things are used to talk, such as living beings. पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण किया जाता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का। जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए मान लेते हैं कि ये लिविंग नहीं है। तो उसमें कवि वॉल्ट विटमैन ने इसी चीज को लिया है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टैंजा नंबर 1। एंड हु आर्ट दाउ, THOU, दाउ, दाउ मीन्स यू, तुम। आर्ट मीन्स आर यू। एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने हु इसमें आई इज वॉल्ट विटमैन। कवि ने कहा रेन से, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है उससे कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने बड़े स्ट्रेंज आश्चर्य से जवाब दिया। गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, उसने जो आंसर दिया रेन ने वो यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, उसने कहा, वॉइस ऑफ द रेन ने कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज, एटर्नल मीन्स कंटिन्यूअल। I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Impalpable, which cannot be described, that is called impalpable. तो उसने कहा कि मैं एटर्नल हूँ, शाश्वत हूँ, आई एम फॉर एवर। और वास्तव में इसे कभी भी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कोई भी। मेरा जन्म बॉटमलेस सी से होता है, समुद्र से मेरा जन्म होता है, और मैं धरती पर हमेशा वापस आती हूँ। इट्स माई प्रोसेस। So in the above lines, the poet asked the soft falling star, "Who are you?" To which the rain replied in a strange to state manner. The rain said that it was the poem of the earth, and it rose continuously from the land and bottomless ocean in the form of vapors. वाटर वेपर के तौर पर ये आती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा इज अपवर्ड टू हेवन, कि जब बॉटमलेस सी में मैं होती हूँ तो मेरा पानी क्या होता है, वेपर बनता है। वो वेपर कहाँ जाता है, सीधा हेवन यानी आसमान की ओर जाता है। वेंस, वेंस मीन्स वेयर, वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, जहां पर वो जितना वेपर गया वो सब क्लियरली नहीं होता, सब ऑल टुगेदर चेंज, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ एक फॉर्मेशन तैयार होता है। एंड येट द सेम, मैं वेपर के तौर पर ऊपर जाती हूँ जो दिखाई भी नहीं देता, बट ऊपर जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है। और चेंज क्या होता है, ऊपर जाकर वो क्लाउड बन जाते हैं, और क्लाउड बनकर फिर नीचे आते हैं, तो फिर वैसे के वैसा है। यानी मैं जैसे जाती हूँ वैसे ही वापस आती हूँ। एंड येट द सेम, फिर भी सब कुछ सेम रहता है। आई डिसेंड टू लीव द थॉट्स, आई डिसेंड, डिसेंड मी टू कम बैक, कम डाउन, टू लीव द ड्रॉट्स, एटमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मीन्स यहाँ पर अर्थ के लिए है। मैं वास्तव में वापस आती हूँ, और जो ड्रॉट्स है, एटमिक डस्ट लेयर्स हैं, ग्लोब की डस्ट लेयर वगैरह, धूल वगैरह होती है, मैं उस सब को समाप्त करती हूँ।
and all that in them without me were seeds only, latent unborn. और उस सबसे ज्यादा धरती की कोख में जो बीज दबे होते हैं, फार्मर्स जब खेती करते हैं तो क्या करते हैं, हल चलाते हैं, उसमें फिर बीज डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर बारिश होती है, उसमें पानी मिलता है सीड्स के लिए, तो वो पौधे बनते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अनबॉर्न, वो कभी पौधे नहीं बन पाते। तो नेचर में आप देखते हैं चारों तरफ हमारे डिफरेंट तरीके के फ्लोरा एंड फौना होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ये सब कुछ एक नेचुरलिस्टिक है, सब प्राकृतिक है। जो बीज वहाँ नीचे गिरते हैं, डिफरेंट वे में पड़ जाते हैं जमीन में, उसके बाद जब बारिश होती है तो उनका पुनर्जन्म हो जाता है। तो उन सबको जीवन कौन देता है, उन सबको जीवन देने का काम बारिश का है। इसलिए मैं कितनों को जीवन देती हूँ, अगर मैं ना आऊं तो वो अनबॉर्न रहेंगे, उनका जन्म होगा ही नहीं। The rain tells the poet that it rises upwards towards the sky in the form of vapor where it changes its form. It also says that although its form gets changed, it still remains the same. The rain comes down to wash the drought and provide water. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface, and the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to the seeds. Next stanza. And forever by day and night, I give back life to my own origin. Forever, हमेशा के लिए, दिन हो चाहे रात हो, कंटिन्यूअसली आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं अपने लिए खुद जीवन प्रदान करती हूँ। अपने लिए जीवन कैसे प्रदान करती है रेन, कि वो बॉटमलेस सी से जो वेपर बनकर ऊपर जाता है, वही वापस नीचे आता है और फिर वही वेपर बन जाता है। तो इस तरीके से जो रेन है, उसका जन्म, उसका बर्थ कहाँ से होता है, समुद्र से होता है, और फिर वापसी भी उसकी उसी में आकर हो जाती है, समुद्र में ही आकर उसकी वापसी होती है। और इस तरह से जो उसका लाइफ लाइफ साइकिल है, दैट इज, वो एक रोटेशन मोड में रहता है। तो आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड for song, issuing from the birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. Ragged or unragged, it means whether cared for or not cared for. It doesn't affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not. कि कोई मुझे सुने या ना सुने, बट आई एम टू परफॉर्म माई ड्यूटी। जो मेरी ड्यूटी है कि मुझे दूसरों को जीवन देना है, वो मैं दूंगी। द रेन सेज दैट बाई डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ, केयर, एनरिचमेंट एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। यानी जहाँ से इसकी ओरिजिन, जहाँ से इसका जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, वो उसके लिए दिन और रात जीवन प्रदान करती है। The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. अपने आप को एक लाइफ साइकिल के तौर पर प्रिपेयर करती है, और इससे क्या होता है, जो धरती माँ है उसको ब्यूटी और प्योरिटी मिलती है। The rain is like a song that originates from its birthplace, just like the heart of the singer, and travels to fulfill the earth's needs and wonders. It finally comes back to the place from where it originated, whether it is hewn or not. It returns to the original position with a lot of love to its birthplace. Here is the summary of the poem. In the poem, the poet asks the soft falling shower, "Who are you?" To which she replies that she is the poem of earth. It is a strange thing for the rain to reply to the poet.
The rain told the poet that she can't be touched as she rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea. It changes its shape, yet it remains the same. The vapor changes into clouds due to condensation. It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought prone areas and to beautify and purify the earth. It provides life to the seeds inside the earth and helps them grow. The rain doesn't care if anyone bothers about her deeds or not. She completes her work and comes back home. The poet also compares the rain with a song as they both share a common journey. यहाँ लास्ट स्टेंजा में पोइट ने रेन को कंपेयर किया है सॉन्ग से। सॉन्ग जो होते हैं गीत होते हैं उससे उसने क्योंकि दोनों की जर्नी लगभग सेम होती है। द सॉन्ग originates from the heart of the singer, travels across to fulfill the aim, and comes back with due love for the singer. जब कोई सिंगर कोई गीत गाता है उसके हार्ट से वो गीत निकलता है, पूरी दुनिया उसको सुनती है और फिर ड्यू लव के साथ में उसके से ढेर सारा प्यार मिलता है और वापस उसी को सब प्राप्त होता है। इन द सेम में जो रेन है उसकी भी ओरिजिनिटी जो है वो भी उसी वे में होती है। There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? इस पोएम में दो आवाज दी गई हैं, वो किसकी हैं और कौन सी लाइन इसको इंडिकेट करती है? The two voices in the poem are the voice of the rain and the voice of the poet. The lines which indicate the voice of the rain are I am the poem of earth, said the voice of the rain, and the lines which indicate the voice of the poet are and who art thou? What does the phrase strange to tell mean? The phrase strange to tell means that it was strange for the soft falling rain to reply to the poet's question. When the poet asked the rain, who art thou? The rain replied, I am the poem of earth. So it was really strange to tell. There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. म्यूजिक और रेन के बीच में जो सिमिलरिटी है, समानता है, वो क्या है? द लाइन्स फॉर द सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns draws a parallel between rain and music. Here the poet compares the life cycles of the rain and the song, as the song originated from the heart of the singer, wanders through the world, whether liked or not, comes back to its birthplace in the end with lots of love. Similarly, the rain that originates from earth fulfills its duty to beautify and purify the earth, and wanders and comes back with love for its creator. How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learned in science. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जो लाइफ साइकिल है इसकी रेन की वो किस तरह से बनती है। इन द पोएम द वाटर राइजेस फ्रॉम द लैंड, वाटर लैंड से राइज होता है, वेपर बनता है बॉटमलेस सी में। इट देन चेंजेस इट्स फॉर्म, उसके बाद इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स, ये क्लाउड्स बन जाता है। इट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ rain to vast drought, provide water, give life to unborn and latent seeds inside the earth. वेपर वेपर इनविजिबल होती है लेकिन ये क्लाउड के तौर पर ट्रांसफॉर्म होता है और क्लाउड्स जो हैं वो वाटर के रूप में नीचे जमीन पर आते हैं और अनबॉर्न और लेटेंट सीड्स को जन्म देते हैं। द रेन प्योरीफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ। In science, the water is evaporated in the form of water vapor, condenses in the sky to form clouds, and then rains down in the form of water into rivers, streams, ground, ocean, etc. In the poem, the rain describes its eternal journey itself. So, these are the main questions mentioned here in the on the both uh, on the basis of the poem you have studied. You have to note down
these question and answer in your notebook. So this poem is over now, and the main thing is summary. If you have prepared the summary very well, you you will capable to answer the questions whatsoever is asked in the examination. You will capable to answer accordingly. Read the poem wholeheartedly, prepare the word meanings, and then note down the summary and the question answers. And I think it's enough for today, as nowadays we are addressing to the virus whatsoever going on, COVID-19. We are addressing, even we are unable to see it, we are unable to feel it, but we are addressing. That is also personification. We are personified that. In the same way, here Walt Whitman has personified the rain. So personified is a very beautiful figure of speech. So okay, dear students, think the whole day. What are the beauties of the nature we use in the day, the whole day whatsoever we use, where we can find out personification. Till then, have a nice day. Enjoy the day.